हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी 2025 के जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, तो उसके लिए मैकेनिकल का टॉपिक कवर कर रहे हैं अपन, फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो इसके पहले अपन ने ऑलरेडी 5 टॉपिक्स जो कवर कर चुके हैं। जिनको अभी तक वो वीडियोस नहीं मिले हैं, प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। जिन्होंने अभी तक प्लेलिस्ट को सेव नहीं किया अपने पास, प्लेलिस्ट को अपने पास सेव कर लीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि टिल एग्जाम तक जो है अपने सभी जो टॉपिक्स है वो कवर करने हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और एक बात बता दूं कि मैकेनिकल के लिए देखिए शॉर्ट नोट प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ अवेलेबल है, जिसमें 49 चैप्टर 370 टॉपिक एंड 4000 एमसीक्यू के साथ ये पीडीएफ अवेलेबल है, जिसमें कंप्लीट मैकेनिकल सिलेबस है। ठीक है, तो जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए होगी, व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। तो देखिए आज फ्लूइड मैकेनिक्स है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स से 25 एमसीक्यूज अपन कवर कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। तो देखिए ऑप्शन है, स्टडी ऑफ फ्लूइड बिहेवियर एट रेस्ट, सेकंड स्टडी ऑफ फ्लूइड बिहेवियर इन मोशन, थर्ड स्टडी ऑफ फ्लूइड बिहेवियर एट रेस्ट एंड इन मोशन, एंड फोर्थ नन ऑफ द। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, स्टडी ऑफ फ्लूइड बिहेवियर एट रेस्ट एंड इन मोशन, बिकॉज फ्लूइड मैकेनिक्स स्टडीज liquid gases and plasmas whether static or flowing. Next, second, which of the following is not a fundamental principle of fluid mechanics? तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट continuity equation, second conservation of linear movement, third conservation of mass, and fourth conservation of electric charge. तो करेक्ट आंसर है फोर्थ, conservation of electric charge, because electric charge conservation is not a fluid mechanic principle. नेक्स्ट, थर्ड, पास्कल लॉ स्टेट दैट। तो देखिए ऑप्शन है, फर्स्ट, प्रेशर अप्लाइड टू कन्फाइंड फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड एंड अनडिमिनिश इन ऑल डायरेक्शन, सेकंड, फ्लूइड वेलोसिटी इंक्रीज विद डेप्थ, थर्ड, फ्लूइड प्रेशर डिक्रीज विद डेप्थ, एंड फोर्थ, प्रेशर इज जीरो एट द सरफेस। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, प्रेशर अप्लाइड टू अ कन्फाइंड fluid is transmitted undiminished in all direction, because this principle is a basis of hydraulic machine. Okay, next, fourth, the SI unit of dynamic viscosity is, so answer is pascal per second. Okay, dynamic viscosity measure fluid resistance to flow. Next, fifth, the Reynolds number help to predict. तो देखो ऑप्शन है, फ्लूइड डेंसिटी, सेकंड प्रेशर डिफरेंसेस, थर्ड फ्लो रेजिमे, एंड फोर्थ वेलोसिटी वेक्टर डायरेक्शन। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, फ्लो रेजिमे, बिकॉज लैमिनार एंड ट्यूबुलेंट, बिकॉज लो रेनॉल्ड नंबर मीन्स लैमिनार फ्लो, दैट इज हाई मीन्स टर्बुलेंट फ्लो. नेक्स्ट, थर्ड, बर्नौली इक्वेशन इज बेस्ड ऑन। तो देखिए ऑप्शन है, कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, थर्ड कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट, एंड फोर्थ नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिकॉज बर्नौली इक्वेशन रिलेट्स प्रेशर, वेलोसिटी एंड एलिवेशन हेड. नेक्स्ट, सेवन, द कंटिन्यूटी इक्वेशन सिग्निफाइज। तो देखिए ऑप्शन है, फर्स्ट कंजर्वेशन ऑफ प्रेशर, सेकंड कंजर्वेशन ऑफ मास फ्लो रेट, थर्ड कंजर्वेशन ऑफ वेलोसिटी, एंड फोर्थ कंजर्वेशन ऑफ टेम्परेचर. तो करेक्ट आंसर है सेकंड, कंजर्वेशन ऑफ मास फ्लो रेट, बिकॉज मास फ्लो रेट रिमेन कांस्टेंट अलोंग अ स्ट्रीम लाइन. नेक्स्ट, एट, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट अ डेप्थ, ठीक है, इन अ फ्लूइड डेंसिटी रियो इज गिवन बाय। तो देखो ऑप्शन है, पी ऑफ रियो ऑफ जी एच, मीन्स यहाँ पे फर्स्ट जो है वो ही करेक्ट आंसर है, बिकॉज प्रेशर इंक्रीज लिनियरली विथ डेप्थ इन फ्लूइड एट रेस्ट. ओके, नेक्स्ट, नाइन, द phenomenon of fluid surface rising or falling in narrow tubes is called. तो देखो ऑप्शन है, कैपिलैरिटी, विस्कोसिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी एंड सरफेस टेंशन. तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, कैपिलैरिटी. ठीक है, कैपिलैरिटी मींस कैपिलैरिटी एक्शन ऑकर ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. नेक्स्ट, टेंथ, विच इक्वेशन गवर्न विस्कॉस फ्लो मोमेंटम. तो देखो ऑप्शन है, नेवियर स्ट्रोक इक्वेशन, सेकंड कंटिन्यूटी इक्वेशन, थर्ड बर्नौली इक्वेशन, एंड फोर्थ लूरर इक्वेशन. तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, नेवियर स्ट्रोक इक्वेशन, बिकॉज इट डिस्क्राइब फ्लूइड फ्लो कंसिडरिंग विस्कोसिटी. नेक्स्ट, 11,
Flow where fluid particles move in parallel layer without mixing is called. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट टर्बुलेंट फ्लो, स्टेडी फ्लो, laminar flow and compressible flow. तो करेक्ट आंसर है थर्ड laminar flow because laminar flow is a smooth and orderly. Next 12th, the buoyant force on a submerged object is. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट equal to the weight of fluid displaced, second equal to the weight of object, third proportional to the object volume only, and fourth dependent of fluid density. तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट equal to the weight of fluid displaced because Archimedes principle govern buoyancy. Next 13, a pitot tube measures. तो देखो ऑप्शन है pressure head only, second velocity pressure, third temperature and fourth fluid density. तो correct answer है second velocity pressure because pitot tube measure fluid velocity via pressure. Next 14, the Bernoulli equation applies to. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट incompressible non viscous flow along a streamline, second compressible flow only, third viscous flow only, and fourth turbulent flow only. तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट incompressible non viscous flow along a streamline because assumption are needed for Bernoulli equation validity. वैसे देखिए जनरल नॉलेज की भी पीडीएफ अवेलेबल है जो एंटायर टॉपिक्स कवर कर देगी, अपडेटेड है 2025 के सभी क्वेश्चंस इसमें आपको मिल जाएंगे. ठीक है, तो जिनको भी पीडीएफ परचेस करना होगा व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, व्हाट कॉज ड्रैग ऑन अ बॉडी मूविंग थ्रू अ फ्लूइड. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट विस्कोसिटी, सेकंड प्रेशर डिफरेंस, third flow separation, and all of the both. Answer है all of the because drag arises from viscous and pressure forces. Next 16, incompressible fluid means. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट डेंसिटी चेंज विथ प्रेशर, सेकंड डेंसिटी इज कांस्टेंट, थर्ड compressible energy is zero, and fourth pressure is constant. तो करेक्ट आंसर है सेकंड डेंसिटी इज कांस्टेंट because fluid density does not change with pressure. नेक्स्ट 17, हाइड्रोलिक डायमीटर इज यूज्ड टू. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट कैलकुलेट फ्लो इन नॉन सर्कुलर कंडक्ट, सेकंड मेजर पाइप डायमीटर ओनली, थर्ड कैलकुलेट स्पीड ऑफ फ्लूइड, एंड फोर्थ मेजर फ्लूइड विस्कोसिटी. तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट कैलकुलेट फ्लो इन अ नॉन सर्कुलर कंडक्ट बिकॉज इट जनरलाइज फ्लो कैलकुलेशन फॉर वेरियस जियोमेट्रिक्स. नेक्स्ट 18, द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन पाइप फ्लो इज. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, सेकंड प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, थर्ड निग्लिजिबल, एंड फोर्थ इंडिपेंडेंट ऑफ पाइप लेंथ. तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी. फ्रिक्शनल लॉस इंक्रीज विथ वेलोसिटी स्क्वायर्ड. नेक्स्ट 19, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट फॉर. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट विस्कोस फ्लो, second incompressible and irrotational flow, third turbulent flow, and fourth compressible flow. तो correct answer है second incompressible and irrotational flow because velocity potential represent streamline flow in idle fluid. Next 20, the characteristics curve of centrifugal pump shows. तो देखिए ऑप्शन है फर्स्ट flow rate versus pressure head, second pressures versus temperature, थर्ड वेलोसिटी वर्सेस फ्लो रेट, एंड फोर्थ विस्कोसिटी वर्सेस प्रेशर. तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट फ्लो रेट वर्सेस प्रेशर रेट बिकॉज यूज्ड टू सिलेक्ट पंप ऑपरेशन पॉइंट्स. नेक्स्ट 21, सरफेस टेंशन कॉज. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इंक्रीज इन फ्लूइड विस्कोसिटी, सेकंड मिनिमाइजेशन ऑफ फ्लूइड सरफेस एरिया, थर्ड इंक्रीज इन फ्लूइड डेंसिटी, एंड फोर्थ रिडक्शन इन फ्लूइड वेलोसिटी. तो करेक्ट आंसर है सेकंड minimization of fluid surface area because surface tension act to reduce fluid surface shape. Next 22, hydraulic gradient express. तो देखिए ऑप्शन है pressure gradient per unit length, second total head loss per unit length, third difference in velocity head, and fourth frictional force per unit weight. तो करेक्ट आंसर है second total head loss per unit length because it indicate energy loss in pipe flow.
नेक्स्ट 23 द ड्रैग कोएफिशिएंट डिपेंड्स ऑन, तो देखिए ऑप्शन है फर्स्ट रेनॉल्ड नंबर एंड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, सेकंड टेम्परेचर ओनली, थर्ड सरफेस टेंशन ओनली एंड फोर्थ नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट रेनॉल्ड नंबर एंड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, इट वेरीज विथ फ्लो रेजिमे एंड ऑब्जेक्ट जियोमेट्री। नेक्स्ट 24 द मैनोमीटर मेजर्स, तो देखो ऑप्शन है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड प्रेशर डिफरेंस, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड एंड सरफेस टेंशन। तो करेक्ट आंसर है सेकंड fluid pressure differences because manometer determine pressure via fluid columns. Next 25 the impulse momentum equation is derived from, तो देखो ऑप्शन है न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड बर्नौली इक्वेशन। तो करेक्ट आंसर है सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ बिकॉज इट रिलेटेड टू फोर्स टू चेंज इन मूवमेंट ओवर टाइम। वैसे देखें जनरल नॉलेज, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर अवेयरनेस सभी पीडीएफ जो है वो अवेलेबल है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोज आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।